हेलो एंड वेलकम टू आरोग्या फिजियो टिप्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो तो मुझे बोलते रहना पड़ेगा सब्सक्राइब करो। 2% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो 98% लोग जो सो रहे हैं वो उठिए और सब्सक्राइब करिए। वैसे भी फ्री में आपको नॉलेज दे रहे हैं, कम से कम इतना तो करिए, सब्सक्राइब करिए। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आप कमेंट करिए कि व्हाट डू यू वांट अस टू मेक। जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू मेक टूडे इज अबाउट कोर engagement. So we made a video about core engagement. The description, you will find the link. So I was talking about basically bringing the pelvic, tilting the pelvic slightly and engaging the core. Now many people are telling me that they are not able to tilt the pelvis, okay, and what should they do that they should be able to tilt the pelvis. Now this happens, आप pelvis tilt इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना वो एक्सटेंशन पैटर्न में चली गई है। वो पैटर्न ही यही हो गया है, यू नो, यू आर ऑलवेज standing like this with your pelvis completely locked, okay, so you're not able to engage the core. In these cases you should follow these 6-7 things which I am telling you, and this should help you out. पर उससे पहले आप आगे नहीं देख सकते हैं जब तक आप सब्सक्राइब ना करें। First thing you can do is diaphragmatic breathing, 360-degree breath. And while you are breathing, you can roll the skin. Skin को roll करिए, इसको lift करिए और फिर roll करिए धीरे से। Lift करिए। अब जब आप ये कर रहे हैं तो long deep breath in and out. Roll. Next is, it is important to do lateral expansion, rib cage expansion, side breathing. So to actually feel the side breath, you can keep a low yoga block. Okay, yoga block को आप chest पे रखिए. So exactly आपका position यहाँ पे आएगा. आपने योगा ब्लॉक यहाँ रखा, आप यहाँ पे लेट गए. Breathe in, breathe out. Now immediately you will feel the expansion on the side. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Do it multiple times in the day. Third way you can breathe is by keeping both the knees on the yoga block, keeping the Pilates ball in between. Now, इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप वहां से खरीद सकते हैं. तो पिलाटे बॉल को दोनों थाइस के बीच में रख दीजिए, नी के नीचे योगा ब्लॉक रख दीजिए. इन दिस पोजीशन what happens is there is a tension which is taken away from the pelvic floor, and there is a maximum breathing happening. While breathing out, try to squeeze the ball and pelvic floor muscle. Breathe in, relax. Breathe out, breathe in, relax. Now, if you want to see how my back is actually expanding, just see. So the involvement of pelvic floor muscle is maximum in this position. So this will also help you in breaking the extension pattern. Breathing in child pose position. So for this, you basically keep the ball on the umbilicus area or the place where diastasis recti is there, and place it like this and relax and breathe. You should breathe maximum. That is important. When you're breathing, you should feel the expansion happening. When you're breathing out, involve your pelvic floor muscles. You can do definitely the Kegels along. Now, next is complete ribcage breathing with resistance. So you put the TheraBand across. So TheraBand ko across le jaiye. Okay. And in this position, breathe in. While breathing in, you're flattening the back further. Breathing out. Engage your pelvic floor muscle. Breathing in, breathing out. So I'm not loosening it up. It is actually expanding. The rib cage expansion is happening.
and breathing out. So my resistance is same. I'm not loosening. I'm basically breathing in and breathing out. So there is a slight pelvic tilt which I'm doing it along. Last one which you can do is keep a yoga block in between the legs. Take it as out as possible. Hold it here. Flatten your back and hold this position. Breathing in and out. Now this will really help in breaking that extension pattern. When you cannot hold anymore, you can straighten and do it multiple times in the day. Okay? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक योगा ब्लॉक खरीदना है, पिलाटे बॉल खरीदना है और योगा मैट चाहिए, थेराबैंड चाहिए और ये सब खरीद के आपको करना क्या है, आपको ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी है, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे करना है. आप कितने बार कर सकते हो? 15 into 3 times. Okay? So each exercise 15 times and then into 3 throughout the day. And जब आप ये रेगुलर बेसिस में करेंगे, then what will happen is your posture from here will start coming into neutral. And once it starts coming into neutral, you know how to engage the core. Engage the core. That video is there down. Okay? पर वो वीडियो देखने से पहले हमें सब्सक्राइब करें और एक योगा मैट खरीदे और ब्लॉक खरीदे और बॉल खरीदे. उसका भी अमेजॉन लिंक हमने दिया है. हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको भेज सके. वो अमेजॉन लिंक है, आप खुद ही खरीद लीजिए. पर उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब.